Good morning दोस्तों and welcome back to my channel. Today we are going to see our 8th next video about English workshop. Number 1 question is read the words oblique names given below. Put the big sized oblique bigger ones in the big circle and the smaller ones in the smaller circle. Here are the words musky, tree, pine, lake, bass. This word is bush. In a poem, I have read this word as a bush. You can pronounce this word bush as well as bush. Next word is highway. Next word scrub. Next word rill. Next word sun, star, and trail. Now you already know that which word is bigger and which word is smaller. For example, musky, it is the name of the fish. You have to write the name in smaller or in bigger. If you understand the poem which is given in our first video, if you understand the poem, then you can write the answer. We know that musky is a bigger fish. Tree is a big. Pine is a big. Now write the smaller things in a smaller circle and bigger things in bigger circle. Like lake, smaller circle. Bass, smaller circle. Bush, smaller circle. Highway, bigger circle. Scrub, smaller circle. Rill, smaller circle. Sun, bigger circle. Star, smaller circle, and trail in smaller circle. Now second question, form groups of 4, read each stanza in the poem turn by turn. Now you have to read the stanza with your friend turn by turn. Firstly you have to read first stanza, the second stanza will be read by your friend, third stanza you, and fourth stanza will be read by your friend. Third question, find and write the pairs of rhyming words from the poem. You have to write pairs of rhyming words from the poem. In first stanza, hill and rill. In second stanza, grass and bass. In third stanza, here, near. In fourth stanza, trail and fell. And star and are also the rhyming pair. Now next question number 4, complete the following with appropriate words oblique phrase from the poem. First one is done for you. Number 1, if you can't be a pine, be a scrub. Now second one is if you can't be a tree, then be. You can write from this poem. Third question, dash, be a bass. Fourth question, if you can't be a captain, write from the poem. Number 5, dash, be a trail. And number 6, if you can't be the sun, then dash. Now you already know the answers, so you have to write this answer from your own. Number 5th question, write whether the following are true or false. Number 1, all must be captain of the teams. It is not true, it is false. Second one, a bite of grass can make the highway happier. It is true. Number 3, we win or fail depending upon size or position. Not, it is not depend on size or position. It is false. Number 4, a scrub is found at the top of the hill. No, it is wrong. It is false. The pine will be found at the top of the hill. Number 5, if your work is not important, don't do it. Yes, it is true. Next, number 6, whatever job you have, do your best. Yes, true. Next question number 6, write an appreciation of the poem with the help of the points given below. Now listen it carefully. Now you are in 8th standard. In 9th and 10th standard you will be given a poem in your question paper for 5 marks, and you have to write the appreciation of the poem. It is the example of the appreciation. Here it is very simple appreciation format given for you in your textbook. Now you have to prepare yourself for writing the appreciation of the poem. Number 1 question is
The title of the poem, you can write the title from the poem. Number second question, the poem is written by. Number third question, the poem has dash stanza, each stanza has dash lines. Number fourth question, the line that rhyme in each stanza are. Number fifth question, the poet compares big things with dash. Number sixth is dash is the repeated expressions in the poem. And number seventh is the line I shall always remember is. Now आपने अप्रिसिएशन में करना क्या है, अप्रिसिएशन के अंदर आपने सबसे पहले पोएम का टाइटल लिखना है कि टाइटल क्या है. यस हमें पता है बी द बेस्ट. सेकेंड वन क्वेश्चन, द पोएम इज रिटन बाय, पोएम को किसने लिखा हुआ है, डोगलास मोलाच इसने लिखा हुआ है. पोएट का नाम आपने पोएम के नीचे से देखकर वहाँ पे कॉपी करना है. थर्ड क्वेश्चन, द पोएम हैज़ 4 स्टांजास, ईच स्टांजा हैज़ 4 लाइन्स. दोनों में 4 आएगा. द लाइन दैट राइम इन ईच स्टांजा आर लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 3. अगर हम पोएम को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि पहली लाइन और तीसरी लाइन के अंदर राइमिंग वर्ड है और दूसरी और चौथी लाइन में राइमिंग वर्ड्स हैं. हर स्टांजा की द लाइन दैट राइम इन ईच स्टांजा आर. अगर हम राइम स्कीम को देखें कि हर स्टांजा में कौन कौन से हैं, तो पहली लाइन का राइमिंग वर्ड तीसरा है और दूसरे लाइन का राइमिंग वर्ड चौथी लाइन है. तो इसे हम राइम स्कीम भी कह सकते हैं. जैसे कि पहली की तीसरी, पहली और तीसरी का राइमिंग वर्ड है, दूसरी और चौथी का राइमिंग वर्ड है. इस राइम स्कीम को हम ए बी इस तरह से भी राइमिंग स्कीम में लिख सकते हैं. राइम स्कीम क्या होती है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. 9th और 10th में आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा. या फिर अगर अभी आपको जानना है कि राइम स्कीम क्या होती है तो मेरे जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें ग्रामर के अंदर या फिर लैंग्वेज स्टडी के अंदर जो है एक राइमिंग स्कीम का वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं. नंबर 5 देखेंगे, द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग्स विथ स्मॉल थिंग्स. नंबर 6 क्वेश्चन इज डैश इज रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम. तो रिपीटेड एक्सप्रेशन क्या है, इसके अंदर रिपीटेड एक्सप्रेशन दी गई है. इफ़ यू कांट बी, इफ़ यू कांट, ये रिपीटेड एक्सप्रेशन है. द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर इज, यस बी द बेस्ट, इट इज़ द मोस्ट रिमेंबरिंग लाइन. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 इज रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर बाय जूलिया फ्लेचर कार्नी. लर्न इट अप, set it to a tune and enjoy singing it. You may ask your teacher to help you. Little drop of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love, help to make earth happy like the heaven above. Okay, I hope that you like the video. If you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Have a nice day. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.